This conference will now be recorded. We will continue on the Farman number 13 from the Baitul Khayal Farman book. Farman Mubarak of Maulana Hazir Imam Salawatullah Alayhi, Baitul Khayal Mulaqat, Toronto, Canada, November 20th, 2017. Promotion Farman, and we were at the page number 17. Sorry, page number 15. Let's start with Imam's blessed name. Nur Maulana Shah Kareemul Husaini Hazir Imam Ya Maulay Mehरबान मदद फरमा या मौलाए मेहरबान मदद फरमा या मौलाए मेहरबान मदद फरमा अलयुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा अलयुल कय्यूम अली अल्लाह अलयुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा या मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला या मौला मेहरबान तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला या मौला अपने नूर से हम गरीबों की मदद फरमा मौला या मौला मेहरबान मदद फरमा मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला या मौला हमारे करीब आजा मौला और करीब आजा मौला अपना हाथ हम गरीबों के ऊपर रख मौला अपने नूर की रोशनी में मौला हमारी हिदायत फरमा मौला ताकि हम कोई इल्मी काम कर सके मौला या मौला मेहरबान मदद मौला मदद तमाम साथियों को एक बार फिर ये आली मदद हम कंटिन्यू करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह फरमाते हैं कीप द बैलेंस but remember I don't want excessive. I don't want spiritual children devoting their lives extensively to the material world. ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा दुनिया के पीछे और दुनिया के लिए सर्फ कर रहे हैं और मौला फरमाते हैं कि आप बैलेंस रखें और दुनिया के पीछे ज्यादा ना भागें. Keep balance, but remember, I don't want excessive, I don't want spiritual children devoting their lives exclusively to the material world. It sounds like that is exactly what we are doing, that our balance is very much off. And we all know it. The amazing part is that we know that our balance is off. But sometimes there's not much we can do about it because our commitment to the world, to the material world, to the jobs and businesses, to the family and friends, our commitment toward them is very excessively, very much, that now we cannot get out of it. Even when we want to, we are having hard time getting out of it, and we know it. I would say it is better to know it, try it,
and then not getting out of it, then those who do not even realize that how much time they are devoting to or have committed to towards the material physical world, and they don't even realize that. If we realize that, then the second step comes, that we would try to adjust. If we can adjust, we would. If we can't, we can't. But at least we realize and we have tried. I believe that is a very important point to remember. But if our statements start with, oh no, I'm keeping a balance, I'm very much in a balance, I'm keeping myself absolutely balanced between Din and Dunya, I think that would be a wrong step, wrong way of thinking. This is just my Garib opinion. Let me tell you why I'm saying that. Let's say you are that one person that have made this chart, the 24-hour chart, and you have checked all the boxes, 24 boxes. And out of them 24 boxes, let's say you have 12 boxes checked for Deen and 12 boxes checked for Dunya. If that is the case, number one, I would like to say Mubarak. Number two, I would like to say we are still not balanced. Why we are still not balanced? Because our 100-year life compared to our 50,000 years of journey of the soul, how will we ever be able to keep up and balance that? We need to have enough here to last us for 50,000 years. That reminds me of a Farman of Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alayhi. May my soul be sacrificed to the Imam. He says, when you die, make sure you have enough good deeds and ibadat to carry you for the next life. Are we packing enough deeds and ibadat? So that 12 hour, if you have checked, let's say, for the ibadat, then we are lacking the good deeds. Because we have done everything for ourselves, nothing for others. Now, if you have checked 13 boxes out of 24, I would say Mubarak, and you are in that 1% absolute who have done a great balance, because you understand that our life hereafter is much bigger than this life. So you have given extra effort to the soul and spiritual life compared to this material and physical life, which is temporary. That is just my Garib, very Nachis, humble opinion. To show a proof why my logic goes that way, that our peers had dedicated 16 hours a day to keep balance. How much? Our peer had given 16 hours a day to the ibadat and good deeds.
So even 13 hour, I would say we are doing good. We would be in that 1%, but we still not where the peers were. And we may never get there. Can we get there? Absolutely, yes, we can get there. But we may never get there, which is fine. At least our intention was to follow Imam's Farman of keeping balance. And that is good enough. And I say to my friends, Mubarak, you are in that top 1%, the one who have kept this Farman in mind and have balanced their life. यहाँ पर थोड़ा सा उर्दू में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हमने अपने जिंदगी को बैलेंस कर लिया है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आपने अपने 24 घंटे का मायना किया और एक चार्ट बनाया जिसमें 24 खाने थे 24 घंटे के, और आपने 12 घंटों को चेक कर लिया दिन के लिए और 12 घंटों को चेक कर लिया दुनिया के लिए। अगर आपने ये कर लिया है तो आपको मुबारक हो। आप 1% ऐसे होंगे जिन्होंने ये किया है। अक्सर लोग, मेजॉरिटी लोग, 99% लोग ये नहीं कर पाते। आप 100 में से एक ही होगे, शायद 1000 में से एक होगे जिसने ये काम किया है। अगर आपने ये किया है तो मुबारक हो आपको। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी 100 साल की है और रूहानी और रूह की जो जर्नी है वो 50,000 साल की है। उस 50,000 साल के लिए क्या हमने इनफ अच्छे अमाल और इबादत को कमा लिया है? अगर नहीं तो फिर भी हम बैलेंस में नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक और घंटा मिला देते हैं, यानी कि 13 घंटा कर देते हैं आमाल और इबादत के लिए, अच्छे आमाल और इबादत के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि हमने अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया। क्योंकि रूहानी जिंदगी लंबी है तो हमने उसको थोड़ा सा ज्यादा दिया, और ये जिंदगी टेम्पररी है, खत्म हो जाने वाली है, और उसके लिए हमने उसको समझते हुए उसके लिए कम घंटे सर्व किए। अब मैं कहूंगा आपको मुबारक, आपने समझकर लॉजिक के साथ अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया। लेकिन याद रखें कि ये लॉजिक पीरों के साथ चलते हुए, उनके फरमान पर चलते हुए आई है कि उन्होंने 16 घंटा रोजाना इमाम को और अपने रूह को और अपने दीन को दिया था, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अगर हमें आखिर के लिए कोई सामान तैयार करना है और वो सफर बड़ा लंबा है, तो फिर उसके लिए हमें 16 घंटे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया 100 साल की और बहुत कम है, तो उसके लिए 8 घंटे बहुत है, और वो जिंदगी, वो सफर बहुत लंबा है, तो उसके लिए ज्यादा वक्त की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम पीरों की तरह 16 घंटे नहीं भी कर सकते और अगर हम 13 घंटे पर आ जाते हैं, तो आप उन खुश नसीबों में से होंगे जिन्होंने इमाम के इस फरमान को मानते हुए बैलेंस कर लिया है, खूब
बैलेंस कर लिया है या कम से कम बैलेंस करने की नीयत बांध ली है, और मुबारक हो आपको। Let's come forward into this Farman. Mullah says, at the same time, I don't think they should devote their life entirely to the spiritual world, because you have dual obligations. You have obligations to your family, to your Jamaat, to whatever you are doing in your worldly lives. You must fulfill those obligations, but at the same time, this is a danger. Don't let those worldly obligations push aside the practice of faith. What we just talked about exactly, that we have made our commitment towards the jobs and work and family and friends, that we cannot get out. Mullah said that is danger. Don't let those obligations push aside the practice of the faith. Again, if we can understand this Farman, Mullah is clearly telling us that he understands that we have committed ourselves to the world, children, business, jobs, friends, but that is a dangerous proposition, and those obligations should not push your practices of the faith. It should not do that. Mullah said, don't let that happen. मुल्ला फरमाते हैं कि मुझे पता है कि आपने अपनी जिंदगी को दुनिया के लिए और उसकी जरूरतों के लिए वक्फ कर दिया है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात है कि आपने दुनिया के लिए अपने मजहब के कामों को एक तरफ छोड़ दिया है। आप ऐसा ना करें, मौला फरमाते हैं, don't let those obligations push aside the practice of faith. Don't let that happen. ऐसा ना होने दें, मौला फरमाते हैं। Remember also that if you take the tasbih at any time during the day or any time during the night, what is that? That is an act of faith. अब मौला हमको रास्ता बताते हैं कि किस तरह से हमारे उन घंटों के अंदर जो हम अपने दीन को देते हैं, अपनी रूह को देते हैं, अपने इमाम को देते हैं, उसके अंदर इजाफा किस तरह करें हम, किस तरह से हम 3 घंटे से 13 घंटे पर पहुंचे, किस तरह से पहुंचे हम। आज हम 3 घंटा तो देते हैं, 13 घंटे पर किस तरह पहुंचे। मौला फरमाते हैं कि जब जब आप अपनी तस्वीर को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, आप अली अल्लाह का नाम लेते हैं, आप मौला को याद करते हैं, चाहे वो लम्हा ही क्यों ना हो, चाहे वो दिन हो, रात हो, आधी रात को आपकी आंख खुलती है और आप मौला को याद करते हैं, आप याद रखें कि वो तमाम आपका दीन के अंदर गिना जाता है। अब हमारे लिए आसान हो गया, 13 घंटे दिन में देना हमारे लिए आसान हो गया। Now Imam is giving us a way out. How do we change our 3 hours for deen and 20 hours for dunya? How do we do that? Keep a tasbih on you. Whenever you touch that tasbih, whenever you remember the tasbih, whenever you remember Mullah, may it be for a second, a minute, or 5. May it be the day or the night. May it be in the middle of the night when you wake up for a glass of water. And if you remember him, he will count all of those time as your faith, as your good deeds, in that help you
in making those 3 hours into 13 hours a day. See, he's teaching us how to do that. Now it's easy for us. If we have a tasbih in our pocket or in our hand, how convenient is that? And whenever we touch, and if we remember him, and that can happen many hundreds of times a day. I can guarantee you it can happen many times, hundreds of times a day. Did you know an average person in the world looks at and picks up his phone 800 times a day? How many times? 800 times a day. If they can touch and pick up their phone 800 times a day, because that is the habit, then if you make your habit to touch and remember Mola 800 times a day, can you imagine where you would be? विचार करें कि एक आम आदमी दिन में 800 मर्तबा अपने फोन को टच करता है या अपने फोन को उठाता है या अपने फोन को देखता है 800 मर्तबा, क्योंकि ये इसकी आदत है। अगर यही आदत आपकी तस्बीह की तरफ हो, इमाम की याद की तरफ हो, तो आप विचार करें कि आप कहां पहुंच गए हैं, आप कहां से कहां जा सकते हैं इंशाल्लाह। आगे मौला फरमाते हैं, इट इज एन एक्ट ऑफ फेथ and therefore that is good, and nobody is instructing you to tell you when to take the tasbih or not to take the tasbih. I love this line. Mullah says nobody can tell you, nobody even would know, because it is in your pocket, it is in your hand. Whenever you feel quietly, you will remember him. Whenever you touch that tasbih, automatically in your heart, the remembrance of Ali Allah would come. And nobody would know and nobody can tell you to do it or not to do it. चूंकि आपने इमाम के फरमान को मानते हुए तस्बीह को पकड़ लिया है, अपनी जेब में रख लिया है, अपने हाथ पर रखा है, अब जब आप उसको छुएंगे, आपके दिल में खामोशी से इमाम की याद आ जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई आपको बोल भी नहीं सकता है कि आप तस्बीह पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा। ये आपके और आपके इमाम के दरमियान है। दिस इज एब्सोल्युटली बिटवीन यू एंड योर इमाम। यू टेक द तस्बीह एनी टाइम you need it, and inshallah it will bring you happiness. So keep that wonderful balance deen and dunya, and inshallah you will find real happiness. And I give you my best special loving blessings. Khana wadan, khana wadan, khana wadan. Mullah says, if you do that, then you can take your tasbih any time you need. And if you do that, it will bring you the spiritual happiness. And that would be a wonderful balance between your deen and dunya, because while you are working, while you are in your dunya, you are taking this tasbih, you are remembering him, you are connecting with him. How great of the balance would that be? That while you are working, while you have a commitment, you have obligation toward your family and toward your work, you are still keeping your remembrance, your connection with the Imam.
And if you do that, you will find your real happiness. And remember, we are talking about the Betul Khyal bowl ceremony for the promotion here. Mola is asking you to remember your bowl all day long, every time you have a chance. Because that Isme Azam comes with lot of blessing, comes with Noor, inshallah, and that will bring you the happiness in your life, in your heart, in your mind. खानावदान खानावदान खानावदान। आपने देखा कि ये बेतुल ख्याल का फरमान है। इमाम इसमें आजम इनायत करते हुए ये फरमाते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया, और बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप अपने पास एक तस्वीर रखें, जब भी उसको छुएंगे, जब भी उसको महसूस करेंगे अपने हाथ में, आप कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आप अपना दुनिया का काम भी कर रहे होगे, उसके दरमियान में भी ऐसा वक्त आएगा कि जहां पर आप अपने मौला के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने उन लम्हों के अंदर अपने इसमें आजम, अपने बोल को याद कर लिया, तो वो आपके अंदर एक रूहानी खुशी ले आएगा। क्यों? कि आपने इमाम के साथ कनेक्शन बनाया है। वो एक बैलेंस हो जाएगा कि आप दुनिया का काम भी कर रहे हैं, साथ साथ में इमाम को याद भी कर रहे हैं, और वो आपके अंदर एक अजीब और गरीब किस्म की रूहानी खुशी ले आएगा। और मौला उसके लिए हमें दो आशीष फरमाते हैं, खाना वदान खाना वदान खाना वदान। Mullah says, the promotions that I will be giving you are going to be given by my missionary here. Someone was asking us a question a couple of weeks ago, and here comes your answer. As I was answering that question, that how Imam sometime give a bowl or multiple bowls to the missionaries, as the Jamaat sitting in the front for the promotion may be there for more than one reason. And what was there? If you remember, let me remind you. 1, because you forgot your ball. 2, because your ball did not work for you. 3, you feel it's time to change the parchi, change the ball. Regardless of which reason you are in, because there are multiple people sitting in this hall for different purposes, Imam gives a ball or multiple balls to the missionary, and you, if you have been to the promotion ceremony, after Mullah leaves the hall, missionaries sort out those people who have forgotten their ball on one side, those people who feel that their ball is not working on the other side, those who feel it is time to change the parchi on the other side. And then according to Imam's Farman, instructions from the Imam Zaman, they give 1, 2, or 3 Isme Azam to different groups. They may have one ball for this group, they may have another one for this group, they may have another one for this group. But whatever the Imam's Farman was, instruction was, wish and will was, that's how they will give the ball and instruct them whatever Imam has given them permission to give. Because now they have the Amr and the permission,
the izn from the Imam Zaman? This was a question somebody was asking other day, and your answer is sitting here. यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं उर्दू में बताता चलूं कि किसी ने 2-3 हफ्ता कबल ये सवाल पूछा था कि क्या वजह है कि प्रमोशन में कभी कभार मौला फरमान फरमाते हैं, दीदार इनायत फरमाते हैं, खाना वतन इनायत फरमाते हैं, और इसके बाद बोल का जो काम है, यानी कि जो बोल देने का काम है, वो मिशनरी के हाथ में दे जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि वहां पर जो हॉल के अंदर, उस हॉल के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो 2-3-4 किस्म के हो सकते हैं। एक वो जो अपना बोल भूल गए थे इसलिए दोबारा आए थे। एक वो जो ये कहते हैं कि हमारा बोल हमारे लिए काम नहीं करता है, हमें दूसरा बोल इनायत फरमा दीजिए। तीसरे वो जो कहते हैं हमें पर्ची बदलनी है, एक और बोल यानी कि एडिशनल बोल की जरूरत है। तो मौला उनको मुमकिन है 1, 2, 3 या उससे ज्यादा बोल इनायत करके जाते हैं, और मौला के तशरीफ ले जाने के बाद वो जमात के अंदर अनाउंस करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अपना बोल भूल गए हैं, इसकी वजह से आए हैं, आप इधर आ जाएं। वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बोल जो हमको पहले मिला था वो काम नहीं कर रहा है, वो इधर आ जाए। वो कौन लोग हैं जो पर्ची बदलने के लिए आए हैं, वो इधर आ जाए। फिर उस मुनासिबत से जो भी मौला की हिदायत होती है, फरमान होता है, वो अमर के साथ उनको वो इसमें आजम देते हैं और सिखाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है, जिस तरह से मौला ने उनको सिखाया और बताया होता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। So the promotion that I will give you, you are going to be given by my missionary here. So he will explain to you what is the nature of the promotions that you will be receiving. I congratulate you on your promotion, and I hope you will have strong happiness, and I give you a special blessing for success. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. I hope you will all be blessed by that light. Subhanallah. तो यहाँ पर एक और बात हम देखते चले और बताते चले और समझने के लिए कि ऐसा ना सोचना कि अगर मौला ने अपने मुख मुबारक से डायरेक्टली हमें वो इसमें आजम इनायत नहीं किया है तो उसमें कोई कमी पेशी आ गई है, ऐसा मत सोचना। उसकी मिसाल देखें हमारी जिंदगियों के अंदर कि जब जिस जमाने में हमारे दरमियान में पीर होते थे तो मौला इसमें आजम पीरों को देते थे, पीर दाइयों को देते थे, दाई माजुनों को देते थे, और फिर उनसे जमातों को ये इसमें आजम मिलता था। क्योंकि अगर एक पीर होता या 2 पीर होते और इलाका बहुत बड़ा था, यानी कि सऊदी अरब से लेकर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल तक की पहाड़ियों तक, चाइना और रशिया तक इस्माइलीज फैले हुए थे। 1-2 पीर हर जगह पर नहीं जा सकते थे, उनके साथ उनके 30 दाई होते थे। कितने? 30 दाई। और उन 30 दाइयों के नीचे उनके हेल्पर्स होते थे, माजून होते थे। माजून मिशनरियों को कहते हैं।
तो देखा आपने, ये ट्रेडिशन कोई नई नहीं है, ये ट्रेडिशन पुरानी है। और इसी तरह से जमात को इसमें आजम इनायत होता था। आज तो हम खुशकिस्मत है कि इमाम डायरेक्टली आकर हमारे दरमियान में बैठकर हमको इसमें आजम से नवाजते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। So let me explain what I just said in Urdu. Here I would like you to remember this, that in our history, near past, this was the process and a tradition that Imam would send Isme Azam through a peer. Because the area was vast, really great landscape from Middle East to Asia to Indo-Pak, all the way to the mountains of Nepal, and on this side, all the way into the China and Russia. It was not possible for one peer to travel to all these places. So he would give this Isme Azam to his dais. And there would be 30 dais who would take this Isme Azam. Even for 30 dais, this area was just too big. So they would give to the Mazun. Mazun are the missionaries today. So this is the process, and a tradition is not something new, but that is the process that has been followed by the Jamaat through the Imam and his Amr and Farman for centuries. Is not new. And don't worry, when Imam gives the Isme Azam through Pir, Dai or Mazun, Isme Azam remains the same. There is no problem then, because Imam, as he does today, and we are so blessed that Imam gives us Isme Azam that directly to us, which is a blessing. It did not happen like that before in the history, but nevertheless, Isme Azam is from the Imam with his blessing. So that is the today's lesson and today's Farman. Inshallah, I believe we have covered very great principles and the keys and understanding of how to practice bowl. What is bowl? What is the balance? And when and where can we recite the bowl? So let me stop here, and we would have about 20 minutes for question, comments, anything you like to ask. Just refrain from asking or sharing your personal experiences or personal things, but in a question form, you can ask anything you like, just not the personal things. जी, जो भी सवाल है आप पूछें, यानी मदद। जी कामरे साहब। Yes, subhanallah, sir. Friends, you can share your question in the chat room. Okay. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कामरे साहब। मुझे नहीं पता आपको ये नजर आ रहा है या मुझे भेजा है। जी सर, I think मैं read कर लेता हूँ. Is that missionary who gives or explains the promotion is the same for all Jamaats or vary according to geography? So let me repeat what we said about our recent past. Imam would give Isme Azam to one Hujjat or the Pir. Pir would give to 30
dies. Why? Because geography is too big. 30 dies will give to many mazoons, because there was no way that they could cover from Middle East to the Asia, to the mountains of Nepal, to China and Russia. If that was the case yesterday, wouldn't that be the case today? Because how can it be that one missionary, let's say when Imam comes to America and he gives Ismi Azam in Houston, Atlanta, Chicago, LA, New York, of course those missionaries would be different. Then the Mullah would go to Canada, and he would go to Toronto, and he would go to Edmonton and Montreal and Vancouver, Edmonton, so many states. The missionary would be different. And look at all over the world. Of course, it's not a one missionary, but whoever Mullah choose and pick from the pool of the local missionaries. Sometime you will find those missionary from out of town, but normally those are the missionaries that are from your state, may not be from your city, but from your state or state around you. G. Okay, so the question, Sir, can we output remember the बताइए, please. ball without having a physical tasbih? Absolutely, yes. Because tasbih is just a reminder, not a requirement. Tasbih is just a reminder, not a requirement. आप अपने बोल को जितना ज्यादा याद करेंगे, उतना करीब से करीब से करीब से करीब आ जाएंगे मौला के। क्योंकि याद रखिए, मौला ने खुद फरमाया है कि आपका बोल आपके और इमाम के दरमियान में एक लिंक है, और इस लिंक को इस्तेमाल करते हुए कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द इमाम। आप जैसा भी चाहें, जब भी चाहें, आप अपने बोल को ज्यादा से ज्यादा याद करें और आ जाएं इमाम के करीब। बेशक जी। So we don't have any question in the chat. Friends, you can unmute your device, your question, or you can use the hand raise feature. कोई सवाल, कुछ ट्रांसलेट करना है जो मैंने इंग्लिश में बोला है उर्दू में? Do you want me to translate anything I said it in Urdu into English? Please ask. We still have 15 minutes if you like to utilize it and use this time. या अली मदद सर। या अली मदद। सर मैं अपनी एक नीस से बात कर रही थी और उसने मुझे पूछा कि हम तस्बीह क्यों नहीं यूज करते हैं इबादत के टाइम पे। आई एम कन्विंस हम क्यों नहीं करते, मैं उसको समझा ही नहीं पाई, क्योंकि शी केप्ट ऑन सेइंग कि इतने फरमान है याली पापा के जिसमें बोल रहे डे एंड नाइट यूज योर तस्बीह। इसके थोड़ा कुछ आप बोलोगे कि हाउ शुड आई हैव सेड दिस? जी बिल्कुल। It's a very good question that Rosina asked. Why do we not use or not encourage to use tasbih during ibadat when there are many farman where Imam says, keep your tasbih with you and remember Allah, Muhammad, Ali, take the name of Imams.
but then at the time of ibadat we don't do that. What is the reason for that? What a great question. Thank you for asking. Acha, Urdu and English, inshallah, because that's a good question. इसके कई वजूहात हैं. एक वजह यह है कि इबादत के वक्त स्पेशली जब हम जमात खाने में हैं, तस्वीर आवाज बहुत करती है. तस्वीर आवाज बहुत करती है. अगर हम तस्वीर को चापेंगे तो आप तो तस्वीर कर रहे हैं लेकिन पूरी जमात को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो आपके करीब है. नंबर 2, जब आप इसमें आजम पढ़ते हैं यानी कि इबादत के अंदर, तो वो खामोश होता है. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कितना इसमें आजम पढ़ा, जबकि तस्वीर गिनने के लिए होती है. क्योंकि वहां पर आप जब उस नाप पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने 100 कर ली है, आपने 33 कर ली है, जबकि इबादत में गिनना नहीं होता है. नंबर 3, इसमें आजम आपके और इमाम के दरमियान में लिंक है, डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको तस्वीर की जरूरत नहीं है. नंबर 4, तस्वीर उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम भूल जाने के खतरात के अंदर होते हैं, जबकि इबादत में आप एक जगह पर बैठकर नियत से इबादत करते हैं, भूल जाने का सवाल पैदा नहीं होता है. नंबर 5, अल्फाज वर्ड तस्बीह के माने हैं तस्बीह करना, जबकि इसमें आजम के इस्तेमाल के साथ हम इबादत के लिए बैठे होते हैं. आपने देखा, और अगर हम गिनती करते हैं तो और भी गिनतियां हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम तस्बीह और इबादत के मानों को समझें, और तस्बीह निकालने का वक्त अलहदा, इबादत करने का वक्त अलहदा है. तस्बीह हम 23 घंटा कर सकते हैं, इबादत 1 घंटे के लिए मखसूस है. कितने रीजन हो गए? अब आप आराम से अपनी नीज को ये जवाब दे पाएंगे. To my English speaking friend, she is asking that why do we not use tasbih during the ibadat when Imam again and again have instructed us to keep the tasbih with us and remember Allah, Muhammad, Ali, Imams. So we were counting how many reasons, and there are many reasons for which we should not use tasbih during ibadat. Number 1, especially if you are in Jamaat Khana and during the ibadat it's very quiet, tasbih makes a lot of sound. It will disturb you and it will disturb the other around you. Number 2, tasbih is to connect to Mola, and ibadat you are connected to the Mola, you do not need a reminder, and tasbih was for the purpose of reminder. Number 3, tasbih gives you a sense of counting. Every time you come to that fine line, you will know I have done 100 times, I have done 33 times. Ibadat cannot be counted. And you should not be counting how many times you have done your Isme Azam during Ibadat. Daytime practice, I myself have told you and have instructed you to practice Isme Azam at least 120 times a minute. But that was during the practice. The keyword was practice during the daytime. Number 4, tasbih is a tasbih in the name tasbih. When the ibadat
is ibadat, not same as tasbih. Tasbih is a practice, a reminder during the daytime, when ibadat is the time of the test, time of connection between you and the imam, and that is between you and the imam quietly and personally. And the last reason was that ibadat, in the ibadat, when you are reciting the Isme Azam, you don't need a reminder, because tasbih was a reminder. Now you are there for that one single purpose of doing ibadat. You know why you are there. You don't need a reminder. So at that time, you focus on your Isme Azam, not on your tasbih. You focus on Isme Azam, not on your tasbih in your hand. Therefore, you should not use tasbih during ibadat. But I have also said, I am a true believer of free will. I cannot tell you what to do. I can only tell you what is right and what is not so much right. That's all I can tell you. I can tell you it is not right to use tasbih during ibadat. But that's all I can tell you. You have your logic, you have your intellect, and on top of all that, you have your free will. But if you ask for my opinion, I would say tasbih is not a right thing to use during ibadat. G. It's another question we have. What does it mean when Hazir Imam congratulates the special murid who came for promotion in this Farman? Nice, very good question. Congratulations to those who forgot and were brave enough to say, I have forgotten, Ya Mullah, please forgive me, give me a Ismi Azam. Congratulations to you. You were so brave to say that. Second, to those who said, Ya Mullah, this Ismi Azam is not working for me. You are so brave. Instead of just doing something without Imam's help, you are brave, so congratulations to you. Third, if you are those who have said, it's time for me to change and go forward, move forward, congratulations to you for your success and for your bravery, that you were able to do what I have instructed you before, and you were successful in your ibadat. Therefore, congratulations. Whoever is asking this question is a great thinker, I would say. It shows that we must pay attention to the every word of Imam. Every word has a meaning. You know, Mullah in one place says, whenever you read Quran, the words must represent a concept to you. And I'm telling you, if you read the Farman, just like you read the Quran, just like you read the Quran, it must bring a concept to you. It must bring a concept to you. The word congratulation brings a concept in our mind that Imam is directly talking to you and you only when he says congratulations to you for whatever purpose you have come. Mubarak. Mubarak to you. Great question. Thank you for asking.
got a few more minutes. Go ahead. Yeah, friends, you can unmute your device if you have any questions. Ali Madad sir. Ya Ali Madad. सर जैसे आप ये बोले ना कि बोल भूल गए उसके बाद प्रमोशन में जाना चाहिए, तो जैसे बोल भूल गए थे और सेम बोल मतलब फिर वापस बोल लेने गए ये सोच के कि बोल भूल गए हैं तो गलत करके फिर वापस से बोल लेने गए, लेकिन प्रमोशन में नहीं गए सर। लेकिन अब आपका लेक्चर सुनने के बाद समझ में आ रहा कि प्रमोशन में जाना चाहिए था, तो इसको कैसे करेक्ट करना सर? जी, बोल भूले कि नहीं भूले, अगर इमाम तशरीफ फरमा है और खुशी खुशी से हमको नवाजना चाहते हैं तो हमको जाना चाहिए। नंबर 1 ये असूल होना चाहिए एक मोमिन मुरीद का कि जब भी इमाम हमें नवाजना चाहे तो हम नवाजिश लेने के लिए पहुंच जाए। जैसा बादशाह कहता आओ मैं अपना खजाना लुटाता हूं तो गरीब लोग दौड़ पड़ते हैं, इस तरह हमको फकीरों की तरह दौड़ पड़ना चाहिए इमाम के दुआ आशीष के लिए, नवाजिश के लिए। जी, अगर आप भूल गए तो भी जाना चाहिए, काम नहीं कर रहा है तो भी जाना चाहिए, काम कर गया है तो भी जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए जाना चाहिए ताकि इमाम की नवाजिश हो। अगर हमने एक मरतबा मिस्टेक कर ली, हमको नहीं पता था, क्योंकि प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि तरक्की, प्रमोशन का मतलब है धक्का देना। मौला आपको बोलता है चलो बच्चों, माँ किस तरह से वो अपने बच्चे के पीछे खड़ी रह के बोलती है चल बेटा चल, और उसके पीछे खड़ी रह के उसको धक्का देती है। आपने देखा होगा ना माँ को कि बच्चा जब चलना सीखता है तो उसके पीछे खड़ी होकर उसको पुश करती है, उसको धक्का देती है। इमाम बोलते हैं आओ मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम रूहानियत की मंजिल पर नहीं चल पा रहे हो या चल पा रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें धक्का दूंगा। प्रमोशन का मतलब होता है प्रमोट करना, पुश करना, धक्का देना आगे की तरफ। जी, याली मदद सर। याली मदद। सर एक फरमान में है, और ऐसा मतलब मेरी किसी रिलेटिव के साथ भी हुआ था कि वो बोल भूल गए थे और वो उनको श्योर नहीं था कि हम मतलब बोल हमारा सही है कि हम रिसाइट कर रहे हैं, तो वो वापस गए। तो फिर मौला के फरमान में है ना कि अगर तुम बोल भूल गए हो तो मैं तुम्हें वही बोल दूंगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। ये भी मौला का एक फरमान है ना, फिर उनको जी वही वाला बोल मिला। जी, तो देखिए ये तो मौला की किसी नवाजिश और हिकमत है, उससे हमें पता चलता है कि मौला हर चीज, हर दिल, हर शख्स को जानता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज फाश करूं तो हो सकता है आपको बहुत ही दिली खुशी होगी, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है 100% कि मौला जब बोल दे रहे होते हैं और हम में से कोई ऐसा है शख्स जो बोल भूल गया है और मौला हमको वही बोल देना चाहते हैं जो हमको पहले दिया था, लेकिन बाकी की जमात को दूसरा और कोई बोल देना चाहते हैं, तो मौला जब अपने मुख मुबारक से वो बोल फरमाएंगे, आपको वो बोल सुनाई देगा माजिजाना तौर पर जो आपका बोल है, बाकी सबको वो बोल सुनाई देगा जो मौला उनको देना चाहते हैं। ये है मौला का सबसे बड़ा माजिजा जो लोगों ने अभी तक कैच नहीं किया है। ये बहुत बड़ा माजिजा है इमाम का कि हो सकता है, मुमकिन है कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उसमें से वो लोग जिसको मौला एक बोल देना चाहते हैं और दूसरों को दूसरा बोल देना चाहते हैं, मौला एक ही बोल के अंदर एक साथ दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग बोल दे रहे होते हैं, और ये हमारे इमाम का बहुत बड़ा माजिजा है।
جو لوگوں نے کبھی بھی کیچ نہیں کیا اس بات کو. جی میں یہاں پر فرزانہ کی بات کو ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. چلیں ایک اور راز فاش کرتے ہیں آج. سپوز کریں کہ اسم اعظم میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے، کیونکہ اسم اعظم کے اندر ایک بہت بڑا اسم اعظم بھی ہے، اور وہ آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے، اور آپ دوسری تیسری چوتھی مرتبہ آئے ہیں بول لینے کے لیے. لیکن اب امام نے آپ کو اچھے میں اچھا، بڑے میں بڑا، اعلیٰ میں اعلیٰ بول دے دیا ہے. تو جب آپ 1000 2000 4000 لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس وہ بول ہے جو آپ کو مولا نے پہلے ہی دے دیا ہے، جب مولا وہ بول فرمائیں گے تو دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے دوسرا بول ہوگا، آپ کے لیے وہی بول ہوگا جو مولا کو آپ کو دینا تھا اور مولا آپ کو دے چکے تھے پہلے. تو یہ بات ادھر بھی درست ہو گئی کہ جہاں پر وہ بھول گئے تھے، وہاں پر بھی درست ہو گئی کہ مولا نے جب آپ کو وہ بول دے دیا ہے جو سب سے بڑا بول تھا، تو بس اس کے بعد آپ کو جب بھی آپ جائیں گے نا، ایک مرتبہ جائیں گے، 2 مرتبہ جائیں گے، 3 مرتبہ جائیں گے، 4 مرتبہ جائیں گے، آپ کو وہی بول سنائی دیں گا، آپ کو وہی بول سنائی دیں گا بس. اور یہ بھی امام کا بہت بڑا معجزہ ہے جو ابھی تک لوگوں نے کیچ نہیں کیا ہے. جی، جی لیکن جب لوگ پروموشن میں جاتے ہیں تو پھر موسٹلی یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ مشنری کے تھرو مولا بول فرماتے ہیں نا، ان کو دیتے ہیں. اوکے، لیکن تو ڈائریکٹ اگر بھی کوئی دیتے مطلب ہیں، ڈائریکٹ بھی دیتے جی ہیں، جی ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں. بس اوکے تھینک یو. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پروموشن کے ہال میں، جیسا میں اگزامپل دوں، دیکھیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں چھوٹی جماعت ہے نا بہت ہی، یعنی کہ ہم پورے امریکہ میں کتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ تو آپ کو ایک ہی سٹی کے اندر کسی پاکستان انڈیا کے اندر مل جائیں گے جتنے پورے امریکہ میں ہے. اور اب کینیڈا میں دیکھیں ہم سے 4 گنا زیادہ ہو گئے. تو جب وہ بڑے بڑے جماعت خانوں کے اندر پروموشن کے یہ لگائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم، ہال بنائے جاتے ہیں، تو چونکہ اگر بہت زیادہ ہزاروں کے حساب سے ہے تو وہاں پر اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. جو بھول گئے ہیں اور پہلی مرتبہ آئے ہیں اس کو ایک جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے. جو لوگ چٹھی بدلنے کے لیے آئے ہیں اس کو دوسری جگہ بٹھا دیا جاتا ہے. اور چونکہ یہ الگ الگ ہوتے ہیں اب پہلے سے ہی، یعنی کہ اس کی چھانٹی ہو گئی ہوتی ہے، اس موقع پر امام از خود اپنے مکھ مبارک سے بولے نائز فرماتے ہیں پروموشن کے اندر بھی. لیکن ہم چونکہ یہاں پر بہت چھوٹی جماعت میں رہتے ہیں نا، ہمارے یہاں مشکل سے 1000 1200 1500 2000 لوگ ہوتے ہیں بیت الخیال کے لیے، اسپیشلی پروموشن کے لیے. تو پھر اس کے اندر وہ سب کو شامل کر لیا جاتا ہے جو بھول گئے ہیں، جو جس کا کام نہیں کرتا ہے، یا جو چٹھی بدلانے آئے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ جی جی، لیکن ایک اور کوشچن ہے کہ مطلب آپ نے بولا نا مولا نے کسی کو پہلے سے ہی مطلب سب سے جو ہائیسٹ دے دیا ہے، تو پروموشن مولا لائک گریجولی جاتے ہیں نا کہ پہلے سب سے کم پھر اس کے بعد زیادہ، یا میرا پہلے اچھا دے دیتے ہیں پھر وہ دوسرا دے دیتے ہیں بول اس سے کم. ہاں. اب آپ بہت زیادہ رازوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا یہ بات، لیکن یاد رکھیں کہ امام کے اس معجزے کو یاد رکھیں آپ. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عبادت میں بہت ہی ترقی کر لیا ہے، اب آخری ایک ترقی اس کی باقی ہے، اور اب وہ پہلی مرتبہ پروموشن کے اندر آیا ہے،
जबकि वहीं पर कोई ऐसा भी शख्स हो गया, बल्कि बहुत सारे लोग हो गए जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मरतबा आए होंगे, तो मौला क्या करेंगे? एक इसमें आजम इस शख्स को, एक को, खाली सिर्फ एक को एक बहुत बड़ा इसमें आजम देंगे जो उसको सुनाई देगा, बाकी किसी को सुनाई नहीं देगा। बाकी सबको जो भी जिस मकाम पर है उसका इसमें आजम मिलता जाएगा। आपने देखा, यही इमाम के माजिज़ात हैं, क्योंकि इमाम आपके रूह से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको वही सुनाई देता है जो इमाम चाहता है। यानी जो मैं तो इमाम मेरा सॉरी मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि आप बोलते हैं ना कि मतलब वो तो मौला का तो कुछ मौला कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पर्सनली आके भी दे सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हेलो, जी जी सुने तो बोलो। मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर कोई सेकंड टाइम आया, कोई थर्ड टाइम आया, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो थर्ड फोर्थ टाइम भी जाते हैं इसमें आजम के लिए, तो जब मौला तो ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि आपको इसको मतलब इस ग्रुप में ये बोल देना है, इस ग्रुप में ये बोल देना है, तो फिर आप आप नहीं बोलते हैं ना सुन रहे जो मेरी बात, वहां पर जहां डायरेक्टली मौला इसमें आजम इनायत फरमा हाँ, रहे हैं, मैं वही बात कर वहां रही हूँ। अच्छा, पर हाँ वहां पर उस शख्स को जिसको बड़ा बोल मिल गया है, जी, उसको फिर इमाम वही बोल सुनाई देता है जो मौला ने उसको पहले दे दिया होता है। और वो मौला कब करते हैं? जब अस खुद मौला वहां पर इसमें आजम दे रहे होते हैं। अब मैं आपकी बात समझ गया कि आप छोटे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पर मिशनरी दे रहे होते हैं। जी 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 जी, जी हाँ जी जी, there was सही है, someone ठीक है, else। मतलब ये था। जी समझ गया आप? सर कुछ फ्रेंड्स चाह रहे हैं कि आप इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करें। Okay, so my sister here was asking, and she has multiple question, or she was trying to ask different ways, same question in a different ways. So what we were discussing between me and Rosina here, or Farzana, sorry, Farzana here, that when Imam comes to give a bowl, it is possible that when Imam gives a bowl, and one of his greatest miracle is, which Jamaat has not caught on to, that is, that there is a possibility that Imam would give a bowl to a murid. Amongst the thousands of murid sitting there, one murid will listen to this one Isme Azam that Imam wants to give to him, and rest of the Jamaat will hear a different Isme Azam. And that is one of the greatest miracle of the Imam Zaman. And no one knows that, and no one have caught on to that. That how Imam perform miracle. Because we all thinking that Imam is giving a Isme Azam, same to everybody. But there is a possibility that one would receive that Isme Azam other than all other people sitting there. Because Imam wants to give him that one Isme Azam. And there are two reasons for that. One, if Imam had given you Isme Azam and you had forgotten, and Imam wanted to just remind you of your Isme Azam, not to give you a new Isme Azam, then you will hear that Isme Azam which Imam had given you before. Second reason, if Imam had already given you for your first time or your second time or your third time or your fourth time a high Isme Azam, then every time you go after that, you will hear the same Isme Azam again and again and again. And that is the miracle of the Imam, because Imam connects with your heart. We see that Imam is there and we are all Jamaat is there.
But if Imam looks at you, he is looking at your soul, not your body, and is connecting with your soul. You will hear what Imam wants you to hear. And that's how Imam perform miracles. And Jamaat has not caught on to that. This is a secret. If I would urge you to keep this secret with you, don't disclose this to others, because others may not understand, they may not be able to comprehend, and they may call you that you have gone mad. Because I would say, and this is just my request, of course you have your free will, keep this secret with you. I'm just sharing this with you. I'm just sharing this with you today. Keep this secret with you. Don't discuss with others. G. Aziz sir, you said that the Jamaat doesn't realize the majizas that the Imam is doing, but how would we realize that Imam is giving one Ismi Azam to one person and another Ismi Azam to another person? How would we know that? That is the secret of the secret. G. Any other comments, question? Sister Yali Madat, Yali just Madad? out of curiosity, so you know how missionaries then afterwards explain to groups, then how does that work if one person has received or heard another word? Right. So that's what I was explaining to Farzana here, that Imam knows who needs what and what group you would be in, right? Uh, So when he would give missionary 2, 3, 4 Ismi Azam, and when missionary will starts to divide those groups, that one person automatically will be in that group in which Imam want him to have that particular Ismi Azam. Subhanallah. He will just get attracted to that group automatically. Thank you. That is a miracle, right? Yeah. Hmm. Next time when Imam comes, I hope and pray each one of us will go there. Number one, to receive the blessings of the Imam, the Khanavadan of the Imam, the Didar of the Imam, and Ismi Azam of the Imam. Number two, with the ilm that you have today, I can almost guarantee you, you will see the miracles. Because sometimes miracles are right in front of our eyes. Miracles are right in front of our eyes. We just don't have a knowledge to see it. G. All right, any last comment, last question? Then we will end here. Okay, Kamra Sahib. Yeah, gee, sir, I think we don't have any questions in the chat either. Thank you everyone for joining us. Yali Madad, Yali Can I ask you Madad. one question? G. Yeah. G, go ahead. Sorry, can I ask you a question, Isbai? Sure, go ahead. At the beginning, you always say when you give a prayer that my soul be sacrificed to that Imam. When you talk about Sultan Muhammad Shah, what does it mean? I'm What's sorry, the what is the question? question is you say, may my soul be sacrificed to
that Imam, Mhm. what does it mean exactly? Can you elaborate on that? Sure. I wish that my Qurbani would be for the Imam. I wanted to sacrifice myself for the Imam-e-Zaman. That's what it means. Because everyone has a wish, right? Some wish that they will take Nandi for Mola Bapa. Some wish they will do khidmat for Mola Bapa like volunteers. I wish my life I could give to Mola Bapa, not just a minute or food or 1 hour of khidmat, but I wish my entire life would be sacrificed to the Imam-e-Zaman. Ji. Shall we stop here? Ji sir. Thank you everyone. Yali Madad, Yali Madad, Yali Madad, and thank you. Yali Yali Madad, Madad, sir. Yali Yali Madad. Madad.